Dealing with Recession. Haroon Sharif. Published in Dawn. December 25, 2022. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. While there is no single definition of recession, it is generally defined as a significant decline in economic activity that lasts for months or even years. Most experts declare a recession when a nation's economy experiences negative GDP, rising levels of unemployment, falling retail sales, and contracting measures of income and manufacturing for an extended period of time. In Pakistan's case, the dangerously fragile currency, high-risk premium in international financial markets, a high debt burden and the recent shock of the devastating floods add to our sad story of economic downturn. Expensive imports and a softening in global demand for exports as well as China's slowdown will add further pressure on Pakistan and the region. Prima facie, all of these negative economic indicators point towards a looming recession in Pakistan. The global economic outlook is also looking grim. Since the beginning of the year, a rapid deterioration of growth prospects coupled with rising inflation and tightening financing conditions has ignited a debate about the possibility of a global recession in 2023. According to the IMF, the main drivers of this pessimistic outlook are downturns in China and Russia, weak consumer spending in the US and tight financial conditions due to higher-than-expected inflation worldwide. Moreover, the fallout from the Ukraine war is further complicating the economic picture. In July 2022, the IMF downgraded their 2022 global growth forecast to 3.2% from 6.1% PC of last year, 0.4% PC lower than forecast in the last Outlook update in April. The expected global slowdown could potentially inflict worse damage than the financial crisis in 2008, warned the UNCTAD in its Trade and Development Report 2022. With higher-than-expected inflation, especially in the US and the largest European economies, global financial conditions are becoming tighter. The recent interest rate hikes in the US will cut an estimated $360 billion of future income for developing nations excluding China, while net capital flows to developing countries have turned negative. As a matter of fact, developing countries are now financing developed ones, the report said. Interest rate hikes by advanced economies are hitting the most vulnerable the hardest. Some 90 developing countries have seen massive devaluation in their currencies against the dollar this year. So, what will happen in a recession that may last over a year, if not longer? In Pakistan's case, the impact is likely to be harsh as the country is dealing with one of its most challenging balance of payments crises. The foreign exchange reserves have sharply declined to a meager $6 billion, hardly sufficient to cover the import bill for a month. This has led to a sharp deterioration in Pakistan's credit rating and investor confidence indices. Continued political instability and rising militancy threats add to the already negative economic outlook. So, what kind of realistic policy response is required and expected from the government to deal with recession? Prima facie, the negative economic indicators point towards a looming recession in Pakistan. Firstly, the government must understand the dynamics of a global slowdown and its potential impact on Pakistan's macroeconomic fault lines. There hasn't been any relaxation in the IMF program or a sympathetic response to cover the damages from the devastating floods. Pakistan is left with no choice but to complete the fund program that will end in June 2023. It is very likely that Pakistan will need another IMF program to complete the adjustment process during the next 3 years. The GDP growth forecast for 2023 has already been slashed downwards to 2-3 PC, and it will continue to remain low in the adjustment period as the IMF will push for monetary tightening and demand compression till the easing of inflationary pressure. There will be a high political cost for any government to fulfill prior actions linked to cutting down subsidies, power sector reforms and removal of several distortions. The predictability of continued bailout support from Saudi Arabia and China is also linked to an endorsement from the fund. China's slowdown has been worse than anticipated amid COVID-19 outbreaks and lockdowns. Moreover,
further lockdowns and a deepening real estate crisis in China has pushed growth down to 3.3% this year, the slowest in more than 4 decades, excluding the pandemic. Secondly, pressures on exports are going to rise due to the higher cost of doing business, slowing down of demand in our traditional trading partners, and the lack of competitiveness in the manufacturing sector. Remittances and traditional FDI flows are already showing a downward trend. Some of the large multinationals may decide to cut down their operations in Pakistan as Eurozone growth has been revised down to less than 3% this year and 1.2% in 2023. Thirdly, job cuts are imminent in a recessionary period and pressures of non-performing loans will be high on the banking sector. With 2.5 million new entrants in the labor market every year, there is no way that the current structure of the economy can provide decent employment opportunities for the youth. Pakistan must prioritize and invest in knowledge-based skills such as IT and nursing, and devise a strategy to export human resources to aging countries like Japan and Germany. This will not only ease the pressure on jobs, but will lead to a higher level of remittances. More losses are expected in the stock market and real estate sector, but both these sectors are linked to the richer segments of society. Since a large portion of Pakistan's economy relies on informal transactions, it could shield small and medium enterprises from some of the recessionary shocks due to lower reliance on bank loans. Among the limited options, the only practical way forward in the recession period will be to cut down on non-essential imports and reliance on oil, energy conservation, and selling strategic stakes in profitable state-owned enterprises to raise foreign exchange. Incentives will have to be created for increased production of essential food items and productivity in the manufacturing sector. The ruling elite should consider shifting their policy focus from populist infrastructure projects to targeted subsidies and delegated institutional models for the implementation of key reforms to diversify the structure of the economy in order to build a resilient economy. The writer is a senior development and economic policy expert. He is currently advising the UN and governments as a leading expert on financing for development. Published in Dawn, December 25, 2022. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. कसाद से निमटना। हारून शरीफ। डान में शाये हुआ। दिसंबर 25, 2022। अगरचे कसाद की कोई वाहिद तारीफ नहीं है, लेकिन इसे आमतौर पर माशी सरगर्मी में नुमायां कमी के तौर पर बयान किया जाता है जो महीनों और सालों तक रहता है। ज्यादातर माहिरीन कसाद का ऐलान करते हैं जब किसी मुल्क की मईशत को मनफी GDP, बेरोजगारी की बढ़ती हुई सतह, खुर्दा फरोख्त में कमी और तवील अरसे तक आमदनी और मैन्युफैक्चरिंग के मुआहदे के इक़दामात का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के मामले में खतरनाक हद तक कमजोर करेंसी, बैन अल-अक़वामी मालियाती मंडियों में हाई रिस्क प्रीमियम, कर्जों का ज्यादा बोझ और तबाहकुन सैलाब का हालिया सदमा हमारी माशी बदहाली की अफसोसनाक कहानी में इजाफा करता है। महंगी दरामदात और बरामदात की आलमी तलब में कमी के साथ साथ चीन की सुस्त रवि पाकिस्तान और खित्ते पर मजीद दबाव बढ़ाएगी। बादी अल-नज़र में ये तमाम मनफी माशी इशारे पाकिस्तान में बढ़ती हुई कसाद की तरफ इशारा करते हैं। आलमी इक़्तिसादी नुक्ता नज़र भी संगीन नजर आ रहा है। साल के आगाज के बाद से बढ़ती हुई अफरात ज़र और सख्त माली हालात के साथ मिलकर तरक्की के इम्कानात में तेजी से खराबी ने 2023 में आलमी कसाद के इम्कान के बारे में एक बहस को जन्म दिया है। IMF के मुताबिक इस मायूस कुन नुक्ता नज़र के बुनियादी मुहर्रिकात चीन और रूस में मंदी, अमेरिका में सार्फिन के कमज़ोर अखराजात और दुनिया भर में तवक्को से ज़्यादा अफरात ज़र की वजह से सख्त माली हालात हैं। मज़ीद बरा, यूक्रेन की जंग का नतीजा माशी तस्वीर को मज़ीद पेचीदा बना रहा है। जुलाई 2022 में IMF ने 2022 की आलमी शरह नमू की पेशगोई को गुज़िश्ता साल के 6.1% से कम करके 3.2% कर दिया था, जो अप्रैल में आखिरी आउटलुक अपडेट की पेशगोई से 0.4% कम है।
UNCTAD ने अपनी ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में मुतनब्बे किया है कि मुतवक्के आलमी सुस्त रवी मुमकिना तौर पर 2008 के माली बहरान से भी बदतर नुकसान पहुंचा सकती है। तवक्को से ज़्यादा इफरात ज़र के साथ, ख़ास तौर पर अमरीका और सबसे बड़ी यूरोपीय मईशतों में आलमी मालियाती हालात सख्त होते जा रहे हैं। अमेरिका में शरह सूद में हालिया इजाफे से चीन को छोड़कर तरक्की पजीर ममालिक की मुस्तकबिल की आमदनी में एक अंदाजे के मुताबिक 360 अरब डॉलर की कटौती होगी, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में खालिस सरमाए का बहाव मनफी हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हकीकत यह है कि तरक्की पजीर ममालिक अब तरक्की याफ्ता ममालिक की माली एआनत कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता मईशतों की तरफ से सूद की शरह में इजाफा सबसे ज्यादा कमजोर लोगों को सबसे ज्यादा मुतासिर कर रहा है। तकरीबन 90 तरक्की पजीर ममालिक ने इस साल डॉलर के मुकाबले में अपनी करेंसियों में बड़े पैमाने पर कमी देखी है। तो कसाद में क्या होगा जो एक साल से ज्यादा अरसे तक चल सकता है, अगर तवील अरसे से नहीं? पाकिस्तान के मामले में इसके असरात सख्त होने का इम्कान है, क्योंकि मुल्क अदायगियों के तवाज़ुन के सबसे मुश्किल बहरान से निमट रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से कम होकर सिर्फ 6 अरब डॉलर रह गए हैं, जो एक माह के दरामदी बिल को पूरा करने के लिए बमुश्किल ही काफ़ी हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग और सरमायाकारों के एतमाद के इशारियों में तेजी से गिरावट आई है। मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम और अस्करियत पसंदी के बढ़ते हुए खतरात पहले से ही मनफी माशी नुक्ता नज़र में इजाफा करते हैं। लिहाजा कसाद से निमटने के लिए हुकूमत से किस तरह के हकीकत पसंदाना पॉलिसी रद्द अमल की ज़रूरत है और तवक्को की जाती है। बादी अल-नज़र में मनफी माशी इशारिया पाकिस्तान में बढ़ती हुई कसाद की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहले हुकूमत को आलमी सुस्त रवी की हरकियात और पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक फॉल्ट लाइन्स पर उसके मुमकिना असरात को समझना होगा। IMF के प्रोग्राम में कोई नरमी नहीं की गई है और न ही तबाकुन सैलाब से होने वाले नुकसानात को पूरा करने के लिए हमदर्दाना रद्द अमल सामने आया है। पाकिस्तान के पास जून 2023 में ख़त्म होने वाले फंड प्रोग्राम को मुकम्मल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस बात का कवी इम्कान है कि पाकिस्तान को अगले 3 सालों के दौरान एडजस्टमेंट का अमल मुकम्मल करने के लिए एक और IMF प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। 2023 के लिए GDP की नमू की पेशगोई पहले ही 2-3% तक कम कर दी गई है और ये एडजस्टमेंट की मुद्दत में भी कम रहेगी, क्योंकि IMF इफरात ज़र के दबाव में नरमी तक मालियाती सख्ती और तलब में कमी पर जोर देगा। किसी भी हुकूमत को सब्सिडीज में कटौती, बिजली के शोबे में इस्लाहात और मुतअद्दिद खराबियों को दूर करने से मुताल्लिक साबिका इक़दामात को पूरा करने के लिए एक आला सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। सऊदी अरब और चीन की जानिब से मुसलसल बेल आउट सपोर्ट की पेशगोई भी फंड की तौसीक से मुंसलिक है। कोविड-19 फैलने और लॉकडाउन के दरमियान चीन की सुस्त रवी तवक्को से कहीं ज्यादा खराब रही है। मजीद लॉकडाउन और चीन में रियल एस्टेट के बढ़ते हुए बहरान ने इस साल शरह नमू को 3.3% तक पहुंचा दिया है, जो वबाई अमराज को छोड़कर 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे में सबसे सुस्त है। दूसरी बात यह है कि कारोबार करने की ज्यादा लागत हमारे रिवायती तिजारती शराकतदारों में तलब में कमी और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में मुसाबकत की कमी की वजह से बरामदात पर दबाव बढ़ने वाला है। तरसीलात ज़र और रिवायती FDI बहाव पहले ही नीचे की तरफ रुझान दिखा रहे हैं। कुछ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को कम करने का फैसला कर सकती हैं, क्योंकि यूरो जोन की शरह नमू इस साल 3% से भी कम और 2023 में 1.2% रह गई है। तीसरी बात यह है कि कसाद के दौर में मुलाजमतों में कटौती नागुज़ीर है और बैंकिंग सेक्टर पर नॉन परफॉर्मिंग कर्जों का दबाव ज्यादा होगा। लेबर मार्केट में हर साल 2.5 मिलियन नए दाखिल होने वालों के साथ कोई रास्ता नहीं है कि मईशत का मौजूदा ढांचा नौजवानों के लिए रोजगार के मुनासिब मौके फराहम कर सकता है। पाकिस्तान को IT और नर्सिंग जैसे इल्म पर मबनी महारतों को तरजीह देनी चाहिए और सरमायाकारी करनी चाहिए, और जापान और जर्मनी जैसे उम्र रसीदा ममालिक को इंसानी वसाइल बरामद करने की हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। इससे न सिर्फ मुलाजमतों पर दबाव कम होगा बल्कि तरसीलात ज़र की सतह में इजाफा होगा। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट सेक्टर में मजीद नुकसानात की तवक्को है, लेकिन ये दोनों शोबे मुआशरे के अमीर तबकात से जुड़े हुए हैं। चूंकि पाकिस्तान की मईशत का एक बड़ा हिस्सा गैर रस्मी लेन देन पर इन्हिसार करता है,
लिहाजा ये छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को बैंक कर्जों पर कम इन्हिसार की वजह से कसाद के कुछ झटकों से बचा सकता है। महदूद इख्तियारात में से कसाद के दौर में आगे बढ़ने का वाहिद अमली रास्ता गैर ज़रूरी दरामदात और तेल पर इन्हिसार, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और गैर मुल्की ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए मुनाफा बख्श रियासती मलकियत के इदारों में स्ट्रेटेजिक हिस्स फ़रोख्त करना होगा। अशियाए खुर्दोनोश की पैदावार में इजाफे और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुराद पैदा करना होंगी। हुक्मरान अशराफिया को अपनी पॉलिसी की तवज्जो पॉपुलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों से हटाकर टारगेटेड सब्सिडीज और तफवीज़ करदा इदारा जाती मॉडल्स पर मरकूज करने पर गौर करना चाहिए ताकि मईशत के ढांचे को मुतनव्वे बनाने के लिए कलीदी इस्लाहात पर अमल दरामद किया जा सके ताकि एक लचकदार मईशत की तामीर की जा सके। मज़मून निगार तरक्की और इक्तिसादी पॉलिसी के सीनियर माहिर हैं। वो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूमतों को तरक्की के लिए माली एआनत के मरूफ माहिर की हैसियत से मशवरा दे रहे हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 25 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.